those of you who are seeing or meeting me for the first time, my name is Bhakti Brihad Bhagavat Swami. तो आप सबके लिए जो आज पहली बार मुझसे मिल रहे हैं मैं बता दूं मेरा नाम है भक्ति बृहद भागवत स्वामी। And this body was born in Durban in South Africa. और मेरा शरीर डरबन साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। That Mataji on the side there with the... No, sitting down on the floor. Yes. Take one garland from Prabhupada and give it to the gift to Java. Now, you understand? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So my translator in Hindi is Janava Priya Mataji. So I have to sort of speak through her consciousness. So that's why we're honoring her. Translate that now. मेरी ट्रांसलेटर या मेरी भाषा का रूपांतरण करने वाली है तो जानना प्रिया माताजी कर रहे हैं, तो मैं उनके थ्रू बोलने वाला हूँ, इसलिए हमने उनकी चेतना के थ्रू बोलने वाला हूँ, इसलिए हमने उनको भी ऑनर किया है। So you can raise your hand and you can, just by the show of the hand, you can indicate to me whether you're seeing me for the first time. Raise your hand. आप में से कौन-कौन है जो महाराज को पहली बार देख रहे हैं? अपना हाथ ऊंचा कीजिए। Oh, almost all of you. Okay. So my humble request is that in order for me to serve you better, you have to ask me questions. Any question. मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आपको अच्छी तरह से सेवा दे सकूं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझसे प्रश्न पूछें, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। Even if you feel that your question is very simple or your question is not so nice, you can feel free to ask. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रश्न जो है वो बहुत ही साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। So who would like to start? कौन शुरू करना चाहेगा? We want just one person to begin, then it will flow after that. Raise your hand. एक प्रश्न करें, उसके बाद हम उसको शुरू कर सकते हैं। I saw Abhishek Prabhu's hand. Any of the Vaishnavis, Mataji, girls? किसी वैष्णव किसी माताजी को कोई प्रश्न पूछना है? Raise your hand. Not you. Yes. Go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. What is your name, Mataji? My name is Santo. Your name is? My name is Santo. Santo. जी आप मुझे बताइए, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मुझे हिंदी आता है, आप गुजराती आता है। आप किसी में भी पूछ सकते हैं। हाँ, गुजराती आता है। મારું એ કહેવાનું છે કે આપણે રાધા કૃષ્ણની તો આપણે પૂજા કરીએ છીએ ઘણા, એ મંદિરમાં બેસીને કરીએ કે મૂર્તિની સામે કરીએ કે આપણે દૂર બેસીને કરીએ અથવા સોફા ઉપર બેસીને કરીએ તો આપણને એમાંથી કેટલો સુખ પ્રાપ્ત થાય। મંદિરની સામે બેસીને કરીએ કે દીવો લગાવીને કરીએ
આપણે ગુરુ બેઠો હોઈએ ત્યારે કરીએ, આપણે ગમે ત્યાં બેસીને માળા કરીએ, અંદર બેસીને આપણે માળા કરીએ તો આપણને એમાં કઈ ફેર પડે છે? So she is asking, when we worship Sri Radha and Krishna, when we worship them or we chant in the temple or we sit on the sofa or we sit near them or we sit far of them, so is there any difference in result when we chant or worship Radha Krishna near them or away from them? So you can tell her that after I explain the answer, if she doesn't understand, she should be honest and say what she does not understand. महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, पर अगर आप उस उत्तर से संतुष्ट ना हो तो मुझे ईमानदारी से बता दीजिएगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ. So ask her what is the age of her eldest grandchild, not the one that's sitting on her. महाराज पूछ रहे हैं आपके सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? बड़े बच्चे का उम्र 42. ग्रैंडचाइल्ड, आपके सबसे बड़े पोते की या जो सबसे बड़ा आपका पोता या पोती उसकी उम्र क्या है? 8 years. So tell her we'll stick to the 42 years old child, which is a son or daughter. Ask. तो आपका जो बेटा या बेटी है जो आपका अपना है, तो वो आप उसके साथ में क्यों नहीं है? उसके साथ ऐसे जैसे आप उसके साथ बैठे उसके साथ क्यों नहीं? इसमें पापा है, मेरा बेटा है. हाँ. So you want to ask her why she is not sitting with the eldest son rather than the grandson, right? So where's the son? Hare Krishna. माता जी महाराज पूछ रहे हैं कि आप उस बच्चे के साथ क्यों बैठे, उसके साथ क्यों नहीं बैठे? So give him the microphone. ऐसा नहीं है. Give him the microphone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So what is your good name? Ritesh. Ritesh. So that is your mama. Yes. Good. Now, Ritesh, when you with your mama and you feel affection, how do you feel? महाराज पूछ रहे हैं कि रितेश जब अपनी मम्मा के साथ में होते हो और उनके लिए आपके मन में वात्सल्य भाव आता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है. माँ के साथ तो किसको अच्छा नहीं लगता? See, everybody feels good with the mother. No, I'm asking Ritesh, not everybody. महाराज कह रहे हैं मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, सबके बारे में नहीं. अच्छा लग रहा है. He feels nice. He feels nice. So now, ask her, microphone, give mama. So ask her similarly, when she's close with her, she can see Radha and Krishna with these eyes, how does she feel? Ask. महाराज पूछ रहे हैं जब आप राधा और कृष्ण को एक दूसरे के पास देखते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. She feels very nice. Now give the microphone, run to the sun. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Now Ritesh, Yes. did you ever leave home and go and study somewhere away from mama? क्या रितेश कभी आप बाहर गए हो पढ़ने के लिए मम्मी को छोड़कर? Yes. Where was that? Nearby Bardoli, 40 kilometers. But you were staying there or you come every day home? Staying there for 2 years. For 2 years. Give microphone to mama. So now ask mama this question. When Ritesh, your beloved son, was away from you and staying in Bareilly. Bardoli. Got it. And ask the mama,
how was she feeling when Ritesh was not in the home? महाराज पूछने कि आपको कैसा लग रहा था जब रितेश बारडोली में रह रहा था, आपसे दूर रह रहा था? I was not feeling good. What is that not good feeling? तो ये जो अच्छा नहीं लग रहा है उसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं वो पढ़ने के लिए गया, लेकिन मैंने मन से नहीं किया ना कि तू पढ़ने के लिए बाहर जा। गाँव में ऐसा था कि वो पढ़ने का जो उसको पढ़ना था वो नहीं था, तो उसको लिए बाहर भेजा, लेकिन वो हर हफ्ते उसको बुला लेती 2 दिन के लिए। She said I was not willing to send him, but because there was not the subject he was willing to study was not here, so I had to send him. Okay, now next question for Mama. Yeah. So when Ritesh was away for 2 years in the other places studying, how do you know that Ritesh is sick, but you're not with him? महाराज कृष्ण जब रितेश बारडोली में रहता था, तो आपको पता चल जाता था? कैसे पता चलता था कि रितेश की तबीयत ठीक नहीं जबकि आप उसके साथ नहीं होते? तब तक तो शायद फोन तो नहीं था, लेकिन जरूर उसको इतना मन से स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, लेकिन याद करे, लेकिन पढ़ने में भी ध्यान दे, माँ बाप को भी याद करे और पढ़ने में भी ध्यान दे। She said that that time there was no phones, but from my heart, I was always blessing that he should be okay and studying well, and he should be taking care of himself and giving the parents. So that means Mama is more with Ritesh when he's not at home. तो इसका मतलब है कि मम्मी रितेश के साथ ज्यादा थी जब रितेश घर पे नहीं था, ऐसा है? But when Ritesh is at home, Mama knows he's next door, in the next room. जब रितेश घर पे होता है तो मम्मा को पता है कि बाजू वाले कमरे में बैठा है। But when Ritesh is not there, she's more with him in her consciousness. और जब रितेश घर पर नहीं है तो मन से माँ ज्यादा रितेश के साथ है। So similarly, Radha and Krishna are always with us. उसी प्रकार राधा और कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। And they are more with us in smarana, remembering. और वो हमारे साथ और अधिक है हमारे स्मरण में। And remembering is the language of the heart. और स्मरण या याद करना ये दिल की भाषा है। Thinking is a function of the mind. सोचना ये मन का कार्य है। So similarly, Ritesh is away from home, but the Mama is feeling his presence more in his absence from the heart. तो इस तरह से जब रितेश घर से बाहर है तो माँ उसकी जो उपस्थिति है वो हृदय में पहले से ज्यादा अनुभव करती है। Because sometimes Mama will go into Ritesh's room कभी-कभी माँ रितेश के कमरे में जाती है and she'll feel the clothes. और वो जो रितेश के कपड़े पड़े हैं उनको छूती है। And although he's in college now, there's one small toy that she sees how he likes to play with it in his younger days. और वहाँ पे एक छोटा सा खिलौना पड़ा है, उसको देख के सोचती है कि बचपन में उसको इस खिलौने से खेलना बड़ा पसंद था। So similarly, the more and more we are affectionate to Radha Krishna, तो हम जितना अधिक हमें राधा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव होगा, and when they are not with us in the personal presence, they are more with us in the heart. और इस तरह से जब वो हमारे साथ ऐसे प्रेजेंट नहीं है वो हमारे हृदय में और ज्यादा अधिक है, पहले से भी अधिक। So relationship with Radha Krishna is not based on physical proximity or geographical distances. It is a consciousness of the heart, which is the consciousness of the soul, which is situated in the region of the heart. तो जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे कितना करीब है शरीर से या हम उनसे कितना दूर है। You can take the microphone away. Take the microphone away. वो उस बात पे निर्भर नहीं करता है, उस बात पे निर्भर करता है कि हमारा प्रेम कैसे है, क्योंकि प्रेम जो है वो हृदय की भाषा है। So this was a very finished. Yes. This was a very nice, wonderful, deep question from Mataji. And we also thank Ritesh for his nice participation.
महाराज कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और रितेश को भी धन्यवाद, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। Let's chant loudly for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next question or comment? किसी को कोई और प्रश्न पूछना है या कुछ टिप्पणी देना? Pass the microphone to the front. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. What's your name? My name is Subham. 1 second. So we'll give a chance to one of the devotees on this side and give a chance to one of the devotees on that side. So next is your chance to ask the question. महाराज कह After रहे him. हैं, एक बार वहाँ से कोई प्रश्न पूछेगा और एक बार यहाँ से पूछेगा, आप ये पूछ रहे हैं तो अगला चांस आपका है। What's your name again? Subham. Shubham. Auspicious. Yes. My basic question is that mostly devotee of Krishna says we should not play in ceremony or like that. So Wait, go a little slow. थोड़ा सा धीरे बोलिए। a lot of Krishna devotees says that we should not play in share market. Not do? Not to deal in share market. Make business in share market, stock market. What is that? Stock market. Because I don't know. Oh, gambling. So can you explain? So ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कृष्ण के भक्त कहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछना चाहते हैं? So mostly people says that it's the 1 second. Lali. Most people say, mostly people say eat microphone, eat. Then speak, close. so why is it there to study about share market in CA and other bachelor's degree in commerce? Hindi. तो बोल रहे हैं कि क्यों हम पढ़ाई करें सीए की, ऐसे कुछ सीए की पढ़ाई करें और शेयर मार्केट की पढ़ाई करें, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए शेयर्स में। Did somebody tell you to do that? Study that or what? But I choose because I was interested in it. So that is your choice. Yes, but I am a new devotee, so here everyone says that it's a gambling, so I thought to quit it. महाराज बोले क्या किसी ने तुमसे कहा है ऐसा करने की? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी अपनी इच्छा थी, मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने वो सब्जेक्ट लिया, लेकिन मैं नया हूँ, जब मैं यहाँ आया तो सबने मुझसे कहा कि ये गैम्बलिंग है, जुआ जैसा, इसको नहीं करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ। Any action in the material world is karma bandhana. It binds you. इस भौतिक जगत में जो भी कर्म है वो कर्म बंधन देता है और हमें इस जगत में बांधता है। But if you engaged in some activity for basic food, clothing and shelter, that is all right. लेकिन अगर आप किसी ऐसे कर्म में लगे हैं जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए है तो वो ठीक है। Just like in an activity of gambling of any type, this is just one example he's giving. This, I don't know, he's saying stock, something. Stock market, Yeah. share market. Yeah. So that's an activity, right? But there's other activities also that are gambling. तो महाराज कहते हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो जुआ की तरह हैं। So now I'm going to switch your consciousness. महाराज कहते हैं मैं तुम्हारी चेतना को परिवर्तित करने वाला हूँ। Just like when you go to college or university and you're doing some study, say in statistics. जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, And you, after 2 or 3 years in that field of study, you realize, nah, I should be studying medicine. और 2-3 साल उसमें पढ़ने के बाद आपको लगता है नहीं, मुझे एक्चुअली मेडिकल में जाना है। So you took risk. तो
तो आपने एक रिस्क लिया, एक It's another form of gambling. ये भी एक तरह का जुआ है। Whole material life is a gamble. वास्तव में पूरी जो भौतिक दुनिया है, जो भौतिक जिंदगी है, वो जुआ ही है। Just like in some uncultured circles, you know, the husband is married to the wife for 15 years. एक असभ्य समाज है, अनकल्चर, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई 15 साल हुए And they have 2 little children. और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। So in the 15th year, the husband is feeling, I made a mistake. I should have married the other one. और 15 साल के बाद हस्बैंड को लगता है कि एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए। That is gambling. It's a risk. ये जुआ है, ये भी तो रिस्क है। Any businessman knows he takes risks. कोई भी बिजनेसमैन जानता है कि वो रिस्क ले रहा है, It's a gamble. ये भी जुआ है। Just like somebody who is a nice, you know, person, who's like a humble school teacher. जैसे एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा है और बहुत ही विनम्र है, स्कूल टीचर है And they teach the children and the adults in primary and secondary school. और वो बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता है। So that may not be considered gambling. हो सकता है कि हमें जुआ के जैसा नहीं दिखता है, But those who are engaged in bigger risk taking, which is gambles, which is one of these examples, he said, their tax money is more. लेकिन जो इस तरह के व्यवसाय में है, जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे पैसा अधिक है And the government collects the taxes. और गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है And they pay the salary of the school teacher who works in the government school. और It is coming from gambling money. और उसी पैसे से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है उसका पैसा देती है, सैलरी देती है, जो गैम्बलिंग से आ रहा है। So everything is karma bandhan. Everything means you become entangled in any activity in the material world. तो हर जो कर्म है वो कर्म बंधन बनता है और इस भौतिक जगत में आपको उससे बांधता है। So in sort of Sanskrit, there are 3 words. संस्कृत में 3 शब्द हैं। There's the Antaranga Shakti, or the internal spiritual potency. अंतरंग शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति। And then there's the Bahiranga Shakti, which is the external potency of the material world. और इस भौतिक जगत को चलाने वाली भगवान की बहिरंग शक्ति। And in between, there is the Tatastha Shakti, which is called marginal potency. और इन दोनों के बीच में है तटस्थ शक्ति। Now, Tatastha Shakti is a potency that everyone has to take a risk or to make a decision. तटस्थ शक्ति जो है वो एक तरह से रिस्क वाली है क्योंकि उसको डिसीजन लेना है। Tatastha Shakti works like this. It creates doubts in your consciousness. और तटस्थ शक्ति इस तरह से काम करती है कि वो आपके मन में संदेह उत्पन्न करती है। Just like Shubham, he's talking to his friend now. जैसे शुभम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। So I'm giving an example of Shubham who asked the question. शुभम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसने एक प्रश्न पूछा है। So while I'm speaking, that is Antaranga Shakti, internal potency. जब मैं बात कर रहा हूँ ये अंतरंगा शक्ति है। But the mind is taking Shubham away from not listening to what I'm saying. और जो मन है वो शुभम को उससे दूर ले जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे सुनना नहीं चाह रहा। That is Bahiranga Shakti, वो external potency. वो बहिरंगा शक्ति है। So the Tatastha Shakti creates doubts. जो तटस्थ शक्ति है वो संदेह उत्पन्न करती है। Should I study this or should I study that? मुझे ये पढ़ना चाहिए या ये पढ़ना चाहिए।
should I buy that garment or this one? मुझे ये कपड़ा खरीदना है या वो कपड़ा खरीदना है? And the color is not good, I should return it. अब मुझे कलर अच्छा नहीं लगा, कुछ और देखना चाहिए। Because in material life, you can never ever be satisfied with anything or anything you do with others. क्योंकि इस भौतिक जगत में आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, जो आप कर रहे हैं उससे भी और जो दूसरों के साथ हो रहा है उससे भी। That is called risk. और इसी को रिस्क कहते हैं। And we took the risk और हमने ये रिस्क लिया है and we came to this material world. और इस भौतिक जगत में आ गए And we may have been born in Surat और हम सूरत में पैदा हो गए with this material body. इस भौतिक शरीर में। In this current life, out of many million species of life and many millions of lifetimes. और इस सिचुएशन में, इस शरीर में कई जन्मों से और कई भौतिक शरीरों में। So either one is influenced materially or one is influenced spiritually. कोई व्यक्ति भौतिक से प्रभावित है या आध्यात्मिक से प्रभावित है। But if you are not influenced materially and you are not influenced spiritually, then you enter Tatastha Shakti, तो यदि आप marginal potency. यदि आप भौतिक से प्रभावित नहीं है या आध्यात्मिक से प्रभाव नहीं है तो आप तटस्थ शक्ति हैं। Tatastha Shakti is like the doorway. He has some announcement. Calling him. Sit down. Let me finish my answer. Tatastha Shakti is like the doorway. तटस्थ शक्ति है वो द्वार की तरह है। The doorway inside or outside? जो दहलीज ना, तो दहलीज की तरह है। दहलीज अंदर है कि बाहर है? जो दहलीज है वो अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ? He's saying neither in or neither in or no out. Good, correct. The doorway is not inside and the doorway is not outside. जो दहलीज है वो ना तो अंदर है ना बाहर। The doorway has its own sphere of existence, which determines what is outside and what is inside. जो दहलीज है वास्तव में उसका अपना अस्तित्व है जो ये तय करता है कि कौन सी जगह अंदर है और कौन सी जगह बाहर है। But nobody lives on the doorway. You're either inside or outside. लेकिन कोई भी दहलीज पे रहता नहीं है, या तो आप अंदर रहेंगे या आप बाहर रहेंगे। So with Shubham's question, because he came to Krishna consciousness, that means Antaranga Shakti, he came to the internal state of spiritual life. So शुभम का जो प्रश्न था उसने कहा कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया, इसका मतलब है वो अंतरंगा के अंदर आया। But because you are talking about this stock thing out there, that is in Bahiranga Shakti, is external material life. और जो आप स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे वो बहिरंगा शक्ति है। Now is asking the question whether it's good to continue to do that since he came to in contact with Krishna consciousness. तो अभी उसका प्रश्न है कि क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उसी में कंटिन्यू करूं कृष्ण भावनामृत में आने के बाद? So if he didn't ask the question and didn't come here, he would have still been out there. So now he's bringing himself to the point of Tatastha Shakti to make a decision, to kick out his doubt. तो क्योंकि अब वो यहाँ नहीं आता तो जो कार्य वो कर रहा था उसे कर रहा होता, पर क्योंकि वो भक्तों के समझ में आया है, उसके मन में ये आया है, तो अब वो इसको पूछ के और इस डाउट को सॉल्व करना चाहता है। I give him the microphone. So Shubham, I have explained to you the principles. शुभम, मैंने तुम्हें सिद्धांत समझा दिया है। Nobody can make a decision for you. Now you make a decision. What would you like to do? कोई भी आपके लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता है, निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते And हैं। a good answer also will be, I do not know. That is also an answer.
और ये भी एक अच्छा उत्तर है कि हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, ये भी अच्छा उत्तर है। I will try to quit share market gradually, but I will try this. You will try to, I will try to quit share market, but gradually. you will try to leave that activity of study by gradually. So whose decision is that, Shubham? Mine or yours? It's mine. Thank you very much. अरे जिससे शुभम कह रहा है कि Let's मैं- chant for Shubham. अरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One time, somebody came to Srila Prabhupada एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए, in the Delhi area. दिल्ली में कहीं पर। So the man asked Srila Prabhupada, Maharaj ji, Swami ji, please bless me. तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा, महाराज जी, स्वामी जी, मेरे पर कृपा कीजिए। Srila Prabhupada asked him, what do you want to be blessed with? प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपको क्या कृपा चाहिए? He got stuck. वो फंस गया। So generally people ask for blessings, but when you ask what blessing, they get confused. तो कई बार लोग बोलते हैं कि हमें ब्लेस कीजिए, तो अगर आप उनसे पूछें कि क्या कृपा चाहिए तो वो बोलेंगे हाँ, उनको समझ में नहीं आता। Then eventually Srila Prabhupada saw that he got a little embarrassed. प्रभुपाद ने देखा कि वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है। So Srila Prabhupada said, Announcement. tell him stand in the queue. So Srila Prabhupada said, I can pray to Krishna to bless you to come closer to Krishna. तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे कहा कि मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि भगवान कृष्ण आपके पास आए, करीब आए। That is called real blessings. इससे वास्तव में इसे कहेंगे Genuine blessings. वास्तविक प्रार्थना कहेंगे। What can I bless you with? I cannot. But I can pray to Krishna to bless you. उन्होंने कहा मैं आप पे क्या कृपा कर सकता हूँ, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वो आप पे कृपा करें। Microphone. Prabhu. What's the announcement? There is a cast of in the room. Tell him to make an announcement. You make an announcement. Haribol. Hare Krishna. One thing. Announcement, come. एमपी की एक गाड़ी है 6032 इको स्पोर्ट, वाइट कलर की है, तो जिसकी भी गाड़ी है वो प्लीज हटा दीजिए। तो रास्ते में खड़ी है तो आने जाने में डिफिकल्टी हो रही है। 6032 इको स्पोर्ट, जिसकी भी गाड़ी है वो प्लीज हटा There's दीजिए। it there. Tell him not to go in the car and drive out. He must come back for prasad. Tell him. आप वापस हरि बोल प्रभु जी, महाराज कह रहे हैं कि गाड़ी के बहाने निकल मत जाएगा, वापस आइएगा। What's your name? Yeah. Oh, you are. Oh. Kartik. Where's Satvi? Is it all? Stand up. You stand up. They half brahmachari. महाराज कह रहे हैं कि दोनों आधा There's another one there. आधे ब्रह्मचारी हैं।
Next question from Odette. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मुझे पूछना है कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? She said, "Well, I want to ask why Krishna take the test." Test, exam. Why Krishna takes test? Ask her, I don't know what you're translating from what she's saying. Ask her if she's meaning, why does Krishna give tests to devotees? Something like that. Ask like that. Give test to you. I'm trying to understand the question. Maybe that's what she's meaning. महाराज पूछ रहे हैं आप पूछना चाहते हैं कि भगवान हमारा टेस्ट क्यों लेते हैं? आपका टेस्ट लिया भगवान? She said, I want to ask that why Krishna takes the test. He took my test. The question is, why does Krishna give tests to the devotees? Yes. Ask her if that's the question. क्या यही आपका प्रश्न है कि भगवान Yes, yes. Janava Priya, we know you know, but listen carefully. Can you repeat what I'm asking? महाराज पूछ रहे हैं कि आप क्या ये पूछना चाहती हैं कि भगवान भक्तों को टेस्ट क्यों देते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान का अपना इतना ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, फिर भी अपना विश्वास नहीं होता। She's asking to Mama to ask that why, when I worship Krishna so much, then why he takes my test? Maharaj, yes, I mean, why Krishna? One takes minute. the please? Shall I give example? आप एक एग्जाम्पल दीजिए. मतलब कि जैसे अपने भगवान का जितना भी ध्यान करते हैं, Mataji, जैसे अपने भगवान का ध्यान करते करते अपना विश्वास बिल्कुल नहीं टूटता, अपने सोचते हैं ये काम अपना बनेगा, मतलब अपने बहुत डर विश्वास रहता है अंदर, फिर भी अपने भक्ति करते हैं उनकी, देखो भूलते नहीं, फिर भी अपनी परीक्षा रहती है। कौन सी परीक्षा है आपकी? महाराज बोले एक एग्जाम्पल दो. जब तक जैसे मैं भगवान का कुछ बचपन से ध्यान करती हूँ, फिर मेरी थोड़ी सी परीक्षा चलती है, पर मुझे विश्वास है मैं अपनी भक्ति में सफल होंगी। She said that since childhood I am worshipping Lord, remembering Him always, but I still feel some challenges in my life. in other words, is she telling us that despite having Krishna in my life, why do I have problems? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यदि भगवान है मेरे जीवन में, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों हैं? हाँ, Yes. Huh. हाँ. So ask her, did the Pandavas have problems? क्या पांडवों के जीवन में तकलीफें थी? आप Give one example of the Pandavas' problem. एक एग्जाम्पल जो पांडवों के जीवन से उनके जीवन में तकलीफ थी, उन्होंने काफी संघर्ष किया, फिर भी उनको अज्ञातवास हुआ। they have so many difficulties in their life and they had to go incognito. So ask her, how many percent can she compare her problem to their problems? Ask. तो आपको क्या लगता है कि पांडवों के जीवन में जो तकलीफें थी, उसका कितना % तकलीफें आपके जीवन में? नहीं, उतना नहीं। Not much. Tell her she doesn't have any problem, she can sit down. तो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, बैठ जाएंगे. Srila Prabhupada wrote one letter प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा to one of his female-bodied disciples. अपने एक शिष्या को. So when she became a devotee and joined us,
जब वो एक भक्त बनी और उसने ज्वाइन किया, and mother and father was giving a very difficult time, उसकी माता और पिता उसको बहुत परेशान कर रहे थे, including cutting off from the will, the will, the inheritance. यहाँ तक कि जो उसका जो माता पिता का जो विल था उसमें भी उसको हटा दिया। So she wrote a letter to Srila Prabhupada explaining a difficulty with her parents. तो उसने श्रील प्रभुपाद को एक पत्र लिखा बताते हुए कि उसको माता पिता से क्या तकलीफ हो रही है। So Srila Prabhupada wrote back and said that Hiranyakashipu wanted to kill his own son Prahlad because he was a devotee. तो प्रभुपाद ने उनको वापस पत्र लिखा और कहा कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि वो भक्त था। Then Srila Prabhupada said, but at least I know your mother and father are not trying to kill you. प्रभुपाद ने कहा मुझे पता है कम से कम तुम्हारे माता पिता तुम्हें मारना नहीं चाहते। So then she realized she doesn't have any problem. तब उसको अनुभव हुआ कि वास्तव में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। And then Srila Prabhupada met her personally. When Srila Prabhupada met her personally, जब प्रभुपाद उससे मिले, he told her, उसको बताया, are they stopping you from being a devotee? क्या वो तुम्हें भक्त बनने से रोक रहे हैं? She said no. उसने कहा नहीं। And he said there is no problem. तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ask her, it's okay. क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? There's another hand was behind you. किसी और को यहाँ प्लीज। What's the name? Janava, the first one who asked question. What's her name? आपका नाम क्या है? मुस्कान। Okay. What's your name now? रेखा। Oh, Lakshman Rekha. Okay, got it. ये पूछना चाहती हूँ जैसे किसी का जन्म होना है, किसी का मरना, ये सब पहले से निश्चित रहता है और ये भगवान की मर्जी होती है कब कौन आने वाला है, कब कौन जाने वाला है। लेकिन जब किसी फैमिली में किसी की डेथ होती है या किसका जन्म होता है, कोई छोटे बच्चे का, तो भगवान से हमें पूरी करनी होती है कि वैसे भगवान बहुत अच्छी करेंगे, बाकी में भगवान को नहीं करेंगे, लेकिन वो एक अपने माहौल में अपने समाज में एक रीत है कि ये मानना होता है। हालांकि अपन नहीं चाहते कि अपन अपने प्रभु की बारह की तरफ सेवा ही नहीं करें, ना उनको खिलाए ना पिलाए ना खिलाए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? She said everything is will of Krishna, the death and the birth. But when Everything is the will of Krishna, the death and the birth, for her. her question is something else, but the way she has composed and composing it to you, the question is something else. She says that, when any death or birth happens in the house, that time we close the altar, it is untouchable, we are untouchable, so we don't offer it anything, our services to the Lord. So why is it so? I don't want to be away from my Lord, but still because of death and birth in the family, we have to close the altar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Rekha, Srila Prabhupada answers your question in a purport in Bhagavad Gita. Tell her that first. महाराज बोल रहे हैं कि इस आपके इस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं अपने तात्पर्य में। So chapter 1, text 41.
chapter 1, text 41. So I'll repeat the verse. Sankaro narakayeva kula jnanam kulasya cha patanti pitaro yesham lupta pindodaka kriya. In the translation, an increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. So, The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. So in other words, she's talking about, I don't know what you say in local language, like Pitriksha or what? Shad? Shad. Is that what she's referring to? she's asking that when there is birth in the family or any death in the family, for 10 days we are not allowed to serve altar. Yeah, the question will be answered now. So read the purport, read the translation and purport first. प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पोते गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म की विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना पूरी परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूत पितामह देवर्षि भूताप्तनृणां पृथ्णां न किं करुणाय मृणीचराचन सर्वात्मनायः शरणं शरणं गतो मुकुन्दं परिवृत्य कल्पम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। Ask if that answers the question. क्या आपको इसमें अपना उत्तर मिल गया है? She only has to tell me yes or no, that's all. हाँ या ना बोलिए। Yes or no. So tell her I have a question for her now. महाराज बोल रहे हैं कि अगर आपको उत्तर मिले तो मैं प्रश्न पूछूंगा। Do you have Bhagavad Gita as it is? क्या आपके पास भगवत गीता यथारूप है? Are you reading? पढ़ रहे हैं आप? So when are you going to start reading? तो आप कब उसे पढ़ना शुरू करेंगे? No, hold microphone close. Tell her to hold the microphone close. मैं कोशिश करूंगी लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं आज नहीं करूंगी या कल से करूंगी और मैं नहीं पढ़ पाऊँ तो कोई छुट्टी दे देगी। She said
it and try to read it, but I'll not say I'll read from today or tomorrow, because if I'm unable to read, then it will be a lie. Till I have next question. एक और प्रश्न है, When you're hungry, do you try to eat? Ask. क्या जब आप भूखे होते हैं तो खाने का प्रयास करते हैं? She said, I do eat. She said, I understood. Ask her what she understood. बताओ क्या समझे आप? I have to start reading. So now I come back to my original question. From when will she start reading? तो मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूँ, कब आप पढ़ना शुरू करेंगे? कल से करते हैं। From tomorrow. From tomorrow. She may leave her body tonight. और अगर आज रात को शरीर चला गया तो? That's the reason why I was not promising, because if I'm not able to put the promise, it will be a lie. She's going back to her old way of explaining things. We don't want to hear that, we want progress. आप अपने पुराने तरीकों में लौट जाना चाहते हैं, पुराने तरीकों से चलना चाहते हैं, इसमें कोई प्रगति नहीं है आपकी, हम चाहते हैं आपकी प्रगति हो। आपको जितना चाहिए So you tell me what shall I do? Before you eat, you must read. Before you eat me, जब खाना खाने से पहले आप उसे पढ़िए। हाँ या ना? हाँ। Tell her I'm not finished with that. अभी महाराज ने भी फिनिश नहीं किया है। When you eat something, how long does it take you to eat? Like say, sometimes it'll take you 5 minutes to eat breakfast or 15 minutes to take lunch. जब आप कोई खाना खाना जब शुरू करते हो तो आपको कितना समय लगता है? जैसे आप नाश्ता खाते हैं, दिन का खाना कितना समय लगता है? वो डिपेंड करता है कि कितना होता है। एक बार तक तो ऐसे होते तो आराम से करते हैं। एक बार ऐसे होता है कि और काम ना आए जैसे कुछ तो अपने चलेगा फटाफट और उस काम पे लग जाए। It depends how much time do I have. Yes. So she should estimate that before she reads, if she's eating for 5 minutes, she should read for 5 minutes and then eat for 5 minutes. महाराज कहते हैं हाँ, तुम इस तरह से निर्धारित कर सकती हो। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कम समय तो 5 मिनट में खाओ और 5 मिनट पढ़ लो। But when she reads for 5 minutes and then she's realizing she's eating for 15 minutes, so after eating she must read for the other 10 minutes. अगर आपको ऐसा लगता है कि 15 मिनट पढ़ना है तो पहले 5 मिनट पढ़ लो, खाने के बाद 10 मिनट पढ़ लो। Because a dead body cannot eat. क्योंकि एक मृत शरीर खा नहीं सकता। You can only eat because you are the soul that's giving life or consciousness to the body to eat. आप खा सकते हैं क्योंकि आप आत्मा है, क्योंकि आत्मा आपके शरीर को ऊर्जा और चेतना दे रहा है जिसकी वजह से आप खा रही हैं। So you first have to honor and respect yourself as Atma, then only you can honor and respect the body which you're wearing a dress over yourself as the Atma. तो आपको सबसे पहले अपनी आत्मा को सम्मान देना है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, और ये शरीर जो आपने ड्रेस की तरह पहन रखा है उसको उसके बाद सम्मान मिलना चाहिए। So now Rekha, one last question. तो रेखा आपसे आखिरी प्रश्न, Where is that Bhagavad Gita in your home? आपके घर में भगवद गीता कहाँ पढ़ी है? ड्राइंग रूम। Can she find it easily? क्या आपको मिल जाएगी? Easily. She is taking darshan of Bhagavad Gita every day, she said. So ask her, she has one daughter there, right? Daughter? क्या Yeah. आपकी बेटी है? So ask her, tell the daughter to stand up. अपनी बेटी को बोलिए खड़ी हो जाएगी। Turn around, face Mama. माँ की तरफ। No, Mama, don't do anything. Just look at her. माँ कुछ करो मत, खाली उसकी तरफ देखते रहो। Don't do anything. Don't speak. Don't smile.
You're taking darshan of your daughter. Take her. उससे बात मत करो, देखो मत, इसका दर्शन करो. After 5 minutes, the daughter will say, Mama, she got pagla. Darshan. बोलेंगे मम्मा पगला दे रही. Similar with Bhagavad Gita. वही भगवद गीता के साथ. You can't just take darshan. Krishna is speaking. Your daughter speaks. Krishna is speaking. You must hear what he speaks. तो ऐसे ही भगवद गीता में सिर्फ दर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके थ्रू भगवान बोल रहे हैं. जैसे आपकी पुत्री है, वो बोलती है, तो आप भगवद गीता में बोल रहे हैं. By reading. आप उसको उत्तर दीजिए, उसको पढ़कर. Offering bhoga for prasad. We take last question. Yes, Prabhu had hand. Microphone. Rekha, thank you. Let's chant for Rekha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. मेरा नाम हरिहर सुंदर दास है। His name is Hari. हरिहर सुंदर. Harihar Sundar Prabhu. Okay, first. मैं चलिया 4 महीने से भक्ति बराबर होती नहीं है। 15 दिन 16 दिन छूटती है, 12-13 दिन छूटती है, फिर आज छूटता है, फिर छूटता है। उसका वजह क्या है और उसके लिए क्या किसके ऊपर दबाव है वो बराबर होता है। See, since last month, my devotional life is fluctuating. Sometimes it's high, sometimes it's very low. So what should I do that it should go nicely, devotional life? Tell him I am not Harihar Sundar. Tell him I am not him. महाराज कह रहे हैं कि मैं हरि सुंदर नहीं हूँ. So tell him to explain to me why that is happening to him. तो महाराज बोल रहे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बोले वही तो समझ नहीं आ रहा है. ये टाइम का कोई इश्यू नहीं है। समझो कि मैं 1 महीने में मतलब 1 महीने में 31 से 16 तक मंगला पूजा रेगुलर किया, फिर ये बाद में टूट गया, ऐसा हो गया। You see, time is not the problem. I have good time, and I was coming for Mangla here regularly for 15 days, and then not coming. So tell him to give us the reason why he is not coming after 15 महाराज days. बोले बताओ आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आ रहे. तो मैं उठ भी तो 4:30 बजे, लेकिन क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। He said I'm waiting up also, but I don't know why I'm not coming. I don't know. I have question for him further. महाराज बोले मेरे पास एक प्रश्न है उसके लिए. Do you only honor Krishna Prasadam, food cooked by devotees and food offered by devotees? Ask him that question. क्या आप सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं जो किसी भक्ति के द्वारा पकाया गया हो और किसी भक्ति के द्वारा ही भगवान को अर्पित किया गया हो? घर में गोर मिठाई भी है, लेकिन घर में कोई भक्त नहीं है, मैं ही करता हूँ। हाँ, मेरी मिसेज है, वो सेवा करती है, प्रसाद भोग लगाती है, और तो प्रोग्राम में जाते हो वही खाते हैं प्रसाद। वो भक्त हैं आपकी मिसेज में भक्त हैं. So he said we have altar at our home, God and I, and I do the seva. My missus is my wife cooks, but she's not devotee. His wife is not devotee. She is cooking and offering. Tell him he is seeing that his wife is not devotee, but she is a devotee. Tell him I said that. महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी
भक्त नहीं है पर वो भक्त है। But that is not my question. पर ये मेरा प्रश्न नहीं है। Ask him that favorite sweet shop near his home. What's the आपके name? घर के आसपास आपकी फेवरेट मिठाई की दुकान कौन सी है? मिठाई की दुकान उमिया उमिया वाला। He says उमिया वाला है स्वीट शॉप। Ask him when last he went there and he bought sweets and आप पिछली बार क्यों गए थे वहाँ पे अपने लिए मिठाई खरीदने? एक दो दिन पहले Nearly 14 January. now, Last year. 2-3 weeks ago. Yes. Ask him, is that prasad? महाराज जी से क्या वो प्रसाद है? So ask him if I answered this question. तो क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला है? मतलब वो प्रसाद मुझे तो नहीं था। हाँ। He said हाँ. That means I should only eat prasad. That means at least he has common sense. Tell him that. That means At least he has common sense to understand where his problem is. आप महाराज कह रहे हैं कि कम से कम आपको इतना समझ है कि आप अपनी समस्या को समझ सकते हैं। Srila Rupa Goswami has said, Vacho vegam manasa krodha vegam. श्री रूप गोस्वामी ने कहा है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम Jiva vegam udaro upastha vegam. जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। So the tongue is vachaha, it vibrates sound. तो जो जिह्वा है वो वाचा है, इसका मतलब है वो शब्द उच्चारण करती है। And the tongue is jiva vegam, it tastes. और जीव का एक जिह्वा वेग है, इसका मतलब है स्वाद। So the vibration of the tongue in sound and the tasting of foodstuffs affects the entire consciousness of the body and the soul. जिह्वा के जो दो कार्य हैं, एक उच्चारण करना और दूसरा स्वाद लेना, ये दोनों ही हमारी चेतना को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। So one gets affected if one eats food, even if it may be vegetarian or without onions and garlic. One will be affected to stay away from the association of devotees. तो ये जो प्रसाद जो खाते हैं हम लोग, वो भले ही वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, भले ही उसमें प्याज लहसुन नहीं हो, लेकिन वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है अगर हम भक्तों से दूर जाते हैं। And his name is Harihar Sundar. You can tell Harihar Sundar Prabhu that I very much appreciate his query. महाराज कह रहे हैं आपका प्रश्न मुझे बहुत पसंद, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। And I deeply am grateful for his humility और आपकी विनम्रता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, because he is very honest, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं। which means satyam or truthfulness in the Kali Yuga. इसका मतलब है कलयुग में सत्य पे है। And by being honest and truthful, one can make spiritual progress. और इस तरह से सत्यवादी और ईमानदार रहने से आप प्रगति कर सकते हैं। So by this nice query from Harihar Sundar Prabhu, तो इस प्रश्न के द्वारा जो हरिहर सुंदर प्रभु ने कहा है, it's helping everyone here today. तो ये इसने सबकी मदद की है, सबके लिए था। So let's chant for him. Rama Rama Hare Hare. This smoke is good. It's purifying me.
So I'm not sure whether I should continue because she's like, she's just having a hand up. Maharaj, I'm here, Maharaj, I'm here. She has that hand up, Maharaj, me. I have course, she's desperate. महाराज कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ मैं खत्म करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका हाथ बार बार उठ रहा है कि महाराज मुझसे पूछ लीजिए एक प्रश्न. So who's in the management there? Can I take that one last question and decide? You blessing? It's okay? Prabhu is blessing you. Oh, you have to be quicker because prasadam is already offered. So my question was, how What's valid- your name? My name is Mohini Murthy. Oh, it's a bewildering question. So my question is, how valid is to get through something made by non-devotee, then offer to Lord and then have it. So how valid is it? Like, still it is made by non-devotee, but then you offer it to Lord and then you have it. So is it considered prasadam or it still has that the tendency that we eat when we don't offer to Lord? So मोहिनी मूर्ति का प्रश्न है, बेटा इसको सुनना जो मैं बोल रही हूँ, आपने नहीं पूछा. मोहिनी मूर्ति का प्रश्न है कि एक तो होता है जैसे हमने कोई प्रसाद बाहर से लिया जो नॉन डिवोटी ने बनाया है, उसको हमने ऑफर किया और उसको हमने प्रसाद के लिया की तरह से, क्या वो वैलिड है, उसे हम प्रसाद माने? Is this your question? So Krishna directly answers your question in Bhagavad Gita, and Prabhupada also gives an explanation in the purport. So ये जो प्रश्न है वो भगवद गीता में डायरेक्टली है और इसमें भगवान उत्तर देते हैं इसका. This is in chapter 9, text number 26. Chapter 9, श्लोका 26 में. Patram pushpam phalam toyam yomi bhaktya prayachati taraham bhaktya paritam asmani prayatatmana. Translation is, one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. So भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ. So towards the end of the first paragraph, I'm reading. Bhakti is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है. No other condition such as becoming a brahmana, a learned scholar, a very rich man or a great philosopher can induce Krishna to accept such offering. किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. भक्ति ही मूलभूत सिद्धांत है जिसके बिना मैं किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते. Bhakti is never causal. The process is eternal. It is direct action in service to the absolute whole. भक्ति कभी भी हेतु नहीं होती. यह शाश्वत विधि है. यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है. Does that answer your question? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला? What if we offer with love
but it's still not made by a non-devotee. तो मोहिनी मोदी के लिए क्या हम भगवान को नॉन डिवोटी के द्वारा बनाए हुए प्रसाद को यदि प्रेम से अर्पित करें तो That considered bhakti. I mean, with love. You are saying that somebody else cooked it and you are taking that and offering it. Right? So who's that somebody else? Is that a devotee or not? महाराज पूछे तुम्हारा मतलब है कि किसी और ने पकाया है और तुम उसे ऑफर कर रहे हो, वो दूसरा कौन है? वो भक्त है या अभक्त है? तो मोहिनी मोदी को ये अभक्त है. But what is Krishna and Srila Prabhupada saying? Now you tell us. Krishna affirmed, Krishna, मुझे पूछो. Krishna accepts. Krishna accepts, offered with love and devotion. That is bhakti. So everything we offer with love to Krishna, that is bhakti. मोहिनी मोदी कह रही है कि भगवान ने कहा है कि जो मुझे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करता है तो वो वास्तव में भक्ति है. Is the love or devotion coming from your side towards Krishna, on Krishna's terms or your terms? So महाराज कहते हैं कि कृष्ण जो भक्ति और जो प्रेम है वो भगवान की तरफ, जो तुम भगवान की तरफ आ रही हो, तुम्हारी शर्तों पे होगा या भगवान की शर्तों पे होगा? If you love somebody, they should be pleased with you. अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो इसका मतलब वो तुमसे प्रसन्न होना चाहिए. But if you love somebody on your terms, that is lust. That is not love. लेकिन यदि आप किसी को प्रेम करते हैं अपनी शर्तों पे तो वो प्रेम नहीं है, वो कामना है, काम है, That is materialistic. जो कि भौतिक है. I demand that you accept my offering. मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि जो मैंने रखा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए. That is lust, not love. ये काम है, ये प्रेम नहीं है. If you love somebody, you will please them as they want to be pleased, तो यदि आप किसी से not as प्रेम, you want to please them. जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, ना कि आप चाहते हैं कि वो आपको प्रसन्न करें. However, very new people will come to Krishna consciousness. यद्यपि जो नए लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, They may come to the temple on Janmashtami, जो जन्माष्टमी पे जो मंदिर आते हैं and they have a lot of common sense. और उनको काफी समझ होती है, They'll bring some fruits and some flowers and even some sweets from that shop. तो वो कभी फल लाते हैं, फूल लाते हैं और मिठाइयाँ भी लाते हैं उस वाली शॉप से, And they'll bring to offer to the Lord. और वो भगवान को भोग लगाने के लिए लाते हैं. The Lord will accept their offering और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं because they are innocent. क्योंकि वो मासूम है. And the Lord will accept the offering to bring them closer to the Lord through the association of devotees. और भगवान उन्हें अपने करीब लाना चाहते हैं भक्तों के संग में रखकर. And when they come to know that I should not now buy sweets from the shop, I should make my own sweets at home and bring for the Lord. Because they are making progress, not because they are doing it at that time. It's because the Lord accepted the offering in the first stage for them to become purified, to come closer into the association of devotees, and then do better and better and better. तो फिर वो जब थोड़े से प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि अब बाहर से मिठाई नहीं खरीदनी है, उन्हें घर में भगवान के लिए स्वीट्स बनानी. इसलिए नहीं कि वो प्रोग्रेस करें, बल्कि इसलिए कि जब वो पहली बार आए थे मंदिर में तो भगवान ने उनकी ऑफरिंग को स्वीकार किया था ताकि वो भक्तों के संग में रहें और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें. Thank you so much for that.
शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की दायरो प्रेमानंदे। Are there any announcements to make? हरे कृष्णा। अभी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा। Thank you very much, Maharaj, for the क्वेश्चन आंसर सेशन।